معزز ناظرین، آپ کو یاد ہوگا 1 سال سے زیادہ عرصے تک چلنے والی فلسطینی اور اسرائیل کے درمیان جنگ بالآخر تھم گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جنگ بندی ہو گئی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ اسرائیلی بندوقوں کو حماس رہا کرے گا اور اسرائیلی جیل میں قید فلسطینیوں کو اسرائیل رہا کرے گا۔ یہ معاہدہ دھیرے دھیرے 3 مرحلوں میں ہونے والا تھا۔ پہلا مرحلہ پورا ہو چکا تھا۔ دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہی تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے جنگ بندی کھٹائی میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سامعین، جب جنگ بندی کی بات ہو رہی تھی اس وقت امریکہ میں پریزیڈنٹ کے لیے انتخابات ہونے والے تھے۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا تو میں یہ جنگ ہونے ہی نہیں دیتا، اور سابق صدر جیو بائیڈن پر تنقید کرتے رہے کہ انہوں نے اسرائیلی اور فلسطین کے درمیان ہونے والی جنگ کو روک نہیں پائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس طرح کے بیانات سے فلسطین میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا والوں کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ ٹرمپ جیت کر پریزیڈنٹ بننے کے بعد فلسطین کے مسئلے کو بہترین طور سے حل کریں گے۔ آخرکار 40,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید ہونے کے بعد امریکہ کے سابق صدر جیو بائیڈن نے قطر کی مدد سے جاتے جاتے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کروائی تھی۔ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ کی کرسی پر سنبھالی، اپنے بیانات سے دنیا کی کئی ملکوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ پاناما نہر کو واپس لینے کی بات کہی اور کینیڈا کو امریکہ میں ملوانے کی بات کہی، تو دوسری طرف کولمبیا اور چین سے امریکہ میں آنے والی چیزوں پر تعرف یعنی ٹیکس لگوائی اور غیر قانونی طور سے امریکہ میں رہنے والے لوگوں کو واپس بھیجنا شروع کیا، جس کے تحت 104 ہندوستانی اور پھر دوسری بار 106 ہندوستانیوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ اب فی الوقت تعریف لگوانے کا معاملہ روک دیا گیا ہے۔ لیکن فلسطین کو لے کر ٹرمپ نے جو اب بات کہی ہے، جس سے فلسطینی اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ دنیا والوں کا یہ خیال تھا کہ ٹرمپ سابق صدر جیو بائیڈن سے بہتر ہوں گے، لیکن غزہ کو لے کر ٹرمپ نے جو بات کہی ہے اس سے صرف فلسطین میں ہی نہیں بلکہ عرب دنیا میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ ٹرمپ نے کیا کہا، یہ سنیے۔ Death and destruction for so many decades, and so bad for the people anywhere near it, and especially those who live there, and frankly who's been really very unlucky. It's been very unlucky. It's been an unlucky place for a long time. Being in its presence just has not been good, and it should not go through a process of rebuilding and occupation by the same people that have really stood there and fought for it and lived there and died there and lived a miserable existence there. Instead, we should go to other countries of interest with humanitarian hearts, and there are many of them that want to do this, and build various domains that will ultimately be occupied by the 1.8 million Palestinians living in Gaza, ending the death and destruction and, frankly, bad luck. This can be paid for by neighboring countries of great wealth. It could be 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12. It could be numerous sites, or it could be one large site. But the people will be able to live in comfort and peace, and we'll make sure something really spectacular is done. They're going to have peace. They're not going to be shot at and killed and destroyed like this civilization of wonderful people has had to endure. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job. Do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years.
I'm hopeful that this ceasefire could be the beginning of a larger and more enduring peace that will end the bloodshed and killing once and for all. With the same goal in mind, my administration has been moving quickly to restore trust in the alliance and rebuild American strength throughout the region. And we've really done that. We're a respected nation again. A lot's happened in the last couple of weeks. We are actually a जंगबंदी के बाद respected गाज़ा में लोगों को राहत महसूस हो रही थी। 40,000 से ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनी शहीद होने के बाद बचे हुए चंद लोग अपने तबाहशुदा मकानों की तरफ वापस लौट ही रहे थे कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि गाज़ा पर फ़लस्तीनियों का कोई हक़ नहीं है। जितने भी लोग गाज़ा में बचे हुए हैं वो गाज़ा खाली करके किसी दूसरे अरब मुल्कों में चले जाएं। मुझे गाज़ा चाहिए। गाज़ा एक रियल एस्टेट से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं गाज़ा में गैर मुल्की अमीर लोगों के लिए एक रिज़ॉर्ट बनवाना चाहता हूँ। और मज़ीद ये कहा कि हमास इसराइल के तमाम बंधकों को रिहा कर दे वरना बचा हुआ गाज़ा भी तबाह कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये बात तो ज़ाहिर थी कि अमेरिका और इसराइल पूरा फ़लस्तीन कब्ज़ा करेंगे, चाहे जिसके लिए कितनी जानें भी चली जाएं। हमें लगता है नाज़रीन कि ये जंगबंदी भी एक ड्रामा था। इस ड्रामे को अंजाम देने में इसराइल और अमेरिका शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अरब मुल्कों को ख़ास तौर से मिस्र और जॉर्डन से कहा कि वो गाज़ा के बचे हुए फ़लस्तीनियों को अपने अपने मुल्कों में बुलवा लें। जो भी मुल्क ट्रंप की बात नहीं मानेगा उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। अब सवाल यह है नाज़रीन कि अब गाज़ा के उन मासूम लोगों का क्या होगा जो अपने ही मुल्क में बेघर हो गए हैं। जब हमास और इसराइल की जंग शुरू हुई थी, अगर उसी वक्त सारे अरब ममालिक एक हो जाते और अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई करते तो शायद 40,000 से ज़्यादा लोग शहीद ना होते। अरब ममालिक अमेरिका और इसराइल के तलवे चाटते रहे और इसराइल अमेरिका की मदद से गाज़ा को तबाह व बर्बाद करता रहा। सारा गाज़ा तबाह होने के बाद, हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद होने के बाद दुनिया को दिखाने के लिए ही सही सारे अरब ममालिक एक हुए, मीटिंग पर मीटिंग करते रहे। बिला आखिर हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हुई थी। अब क्या होगा नाज़रीन? अब तो अमेरिका डायरेक्ट अरब मुल्कों को वार्निंग दे रहा है कि फ़लस्तीन के मुस्तक़िल हल के लिए अरब ममालिक में फ़लस्तीनियों को जगह दी जाए। पता चला है कि 2-3 दिनों में सारे अरब ममालिकों की एक मीटिंग होने वाली है। हमें मालूम है दोस्तों इस मीटिंग में नतीजा क्या निकलेगा। अमेरिका को पलटकर जवाब देने की हिम्मत तो इनमें नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई रेजोल्यूशन पास करेंगे और ये मामला यूनाइटेड नेशन में ले जाएंगे, जबकि सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका और इसराइल यूनाइटेड नेशन की धमकियों की कोई परवाह नहीं करते। हकीकत बात तो यह है नाज़रीन कि अब इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान होने वाली जंग फ़ैसला कर मरहले पर पहुंच चुकी है। अब 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। ये क्या तो सारा फ़लस्तीन को अमेरिका की मदद से इसराइल कब्ज़ा करेगा और तमाम फ़लस्तीनी अपने मुल्क से बेघर हो जाएंगे और किसी दूसरे मुल्क में जाकर पनाह लेना पड़ेगा, या तो दूसरा रास्ता सिर्फ यही है कि सारे अरब ममालिक और दूसरे वो ममालिक जो फ़लस्तीन को बचाना चाहते हैं, फ़लस्तीन से हमदर्दी रखते हैं, वो सब एक होकर अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ हो जाएं। अब देखना ये होगा कि अरब ममालिक की मीटिंग में क्या होगा। नाज़रीन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें।